Dear 10th class students, in this video I am going to tell you nature of roots. In the previous section, you have seen that the roots of standard form quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 are given by x equal minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a. You are seeing here if b square minus 4ac is greater 0, then we will get two distinct real roots minus b plus under root b square minus 4ac divided by 2a and minus b minus under root b square minus 4ac divided by 2a. So we say that in this case the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has two distinct real roots, and if b square minus 4ac equal 0, then we will get two equal real roots minus b by 2a and minus b by 2a. So we say that in this case the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has two equal real roots, and if b square minus 4ac is less 0, then there is no number whose square will be b square minus 4ac. So we say that in this case
the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has no real roots. So in this case the equation ax square plus bx plus c equal 0 has no real roots. You are seeing here also, if b square minus 4ac will be perfect square of any number, then the value of x will be rational. And if b square minus 4ac is not perfect square of any number, then the value of x will be irrational. Since b square minus 4ac determines whether the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has real roots or not. Since b square minus 4ac determines whether the quadratic equation has two real roots or not. So b square minus 4ac is called discriminant and denoted by capital D. Therefore, we say that the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has therefore the quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 has first two real rational and distinct roots if b square minus 4ac is greater 0 and
बी स्क्वायर माइनस 4ac is perfect square of any number. Second, has two real irrational and distinct roots if b square minus 4ac is greater 0 and b square minus 4ac is not perfect square of any number. Third, has two real rational equal roots. Two real equal real rational equal roots if b square minus 4ac equal 0. Fourth, has no real roots, no real roots if b square minus 4ac is less 0. बच्चों, ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के गिवन होने पर उसके रूट्स के नेचर मालूम कर सकते हैं यदि ये कंडीशन याद रखेंगे। बच्चों, एक बार और सुनिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के रूट्स प्राप्त करने के लिए फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a होता है। यहाँ देखिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर 0 है तब तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट फाइंड होगा और तब रूट्स फाइंड होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इज लेस 0 है, मीन्स निगेटिव है, और तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा। और इस स्थिति में जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस 0 है, कोई रूट्स फाइंड नहीं होगा। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है तब उसका स्क्वायर रूट पूरी संख्या प्राप्त होगी और तब जो रूट्स होंगे वो रेशनल होंगे, मीन्स परिमेय होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी संख्या का, तब बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट कोई पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी, और इस स्थिति में जो रूट्स प्राप्त होंगे वो इरेशनल होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस 0 है, तब इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, मीन्स कोई मूल नहीं होंगे उस इक्वेशन के जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस 0 है। बच्चों, ये कंडीशंस आप सभी को याद रखना आवश्यक है, और याद रखने के लिए समझना आवश्यक है कैसे ये कंडीशन फाइंड किए हैं। यहाँ मैं सब कुछ बताया। नाउ you see exercise 4.6 here given first question quiz NCERT question। निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें नेचर फाइंड करना है कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूलों के नेचर कैसे हैं, वो वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं है, या इक्वल रूट्स हैं, या परिमेय है या अपरिमेय है। दिस इज एक्सरसाइज 4.6। Here given question number 1, first part, given equation 2x square minus 3x plus 5 equal 0. We are comparing this equation with standard form quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0. We obtain value of a equal to b equal minus 3 and c equal 5. Now we calculate value of t equal b square minus 4ac minus 3 square minus 4 into 2 into 5 9 minus 4 to 8 5 ja 40. This will be equal to minus 31. Since we get here d equal minus 31, who is less than 0, so given equation has no real roots. This is answer. Second part, given equation 3x square minus 4 root 3x plus 4 equal 0. Same, you can tell nature of this equation. This is second part, 3x square
माइनस 4√3x प्लस 4 equal 0. Hereby comparing this equation with standard form quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0, we obtain a equal 3, b equal minus 4√3 and c equal 4. Now we calculate discriminant d equal b square minus 4ac. Put the value here a, b and c. Minus 4√3 square minus 4 into 3 into 4. Simplify this. 48, 4 4 ja 16 into 3, 48 minus 4 3 ja 12, 4 ja 48. This will be equal to 0. Since we get here d equal 0, so given equation has two real rational equal roots. मीन्स इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और समान होंगे. नेक्स्ट you see question number 2. निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों में k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के दो बराबर मूल प्राप्त हो. क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट. Given equation 2x square plus kx plus 3 equal 0. Here finding value of k when roots of this equation are equal. Comparing this equation with standard form quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0, we obtain value of a equal to b equal k and c equal 3. Now we calculate discriminant d equal b square minus 4ac. Put the value of b, a, c. Here we may write k square minus 4 into 2 into 3, k square minus 24. This is the value of d. For equal roots
यहाँ k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इस गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों। यू नो दैट फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट will be equal to 0. We may write here k square minus 24 equal 0. We get k square equal 24. K equal plus minus under root 24. This will be equal to plus minus 2 under root 6. So, value of k is equal to plus minus 2 root 6. This is answer. Second part of this question. Given equation kx into x minus 2 plus 6 equal 0. Here also finding the value of k when this given equation has two real equal roots. This is second part. Equation is kx into x minus 2 plus 6 equal 0. Simplify this given equation. We may write as kx square minus 2kx plus 6 equal 0. Here value of k will be value of a will be k, value of b will be equal to minus 2k, and value of c will be equal to 6. Now we calculate discriminant d equal b square minus 4ac. Put the value here a, b and c. We may write 4k square minus 4 into a equal k into c. This is the value of d. We may write d equal 4k square minus 24k for equal roots. You know that d will be equal to 0. So we may write 4k square minus 24k equal 0. Factorize this. We take common here 4k. We get k minus 6 equal 0. So we get from here k equal 0 or 6. But if k equal 0, then x square into 0 will be 0, and this equation will not be quadratic equation. So here k equal 0 is impossible. So value of k equal 6.
since k equal 0 is not satisfied, the given quadratic equation so k equal 0 is not possible. And so value of k will be equal to 6. This is answer. Next, क्वेश्चन नंबर 3, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 4x स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल 0 के मूल बराबर होंगे? Given quadratic equation k plus 4x square plus k plus 1x plus 1 equal 0. Here finding value of k when this equation has two real roots. Here a equal k plus 4, b equal k plus 1, c equal 1. So we calculate d equal b square minus 4ac equal k plus 1 whole square minus 4 into a who is k plus 4 into c into 1 since value of c equal 1. We get d equal k plus 1 whole square minus 4k minus 16. Simplify this. D is equal k square plus 1 plus 2k minus 4k minus 16. We may write d equal k square minus 2k minus 15 for equal roots. You know that d equal 0, so we may write here k square minus 2k minus 15 equal 0. Factorize this equation. K square minus 5k plus 3k minus 15 equal 0. Take common here k, we get k minus 5 plus 3 k minus 5 equal 0. We get k minus 5 k plus 3 equal 0. We get value of k equal 5 minus 3. This is answer. Next question.
यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल 0 का एक मूल -5 है तथा द्विघात समीकरण p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k इक्वल 0 के मूल बराबर हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, since -5 is the root of quadratic equation 2x square -2x square plus px minus 15 equal 0. So x equal -5 से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। So put here x equal -5 in given equation. We get 2 into -5 square plus p into -5 minus 15 equal 0. We get 50 minus 5p minus 15 equal 0. We get minus 5p equal minus 35. We get value of p equal minus 35 divided by minus 5. 5 7 ja 35 7. So we get value of p equal 7. Next, given equation px square plus x plus k equal 0 के मूल बराबर हैं। Since equation px square plus x plus k equal 0 has equal roots, so px square plus px plus k equal 0. Here a equal p, b equal also p and c equal k. Since given equation has equal roots, for equal roots we may write d equal b square minus 4ac equal 0. b square, since value of b equal p, so we may write here p square minus 4 into a p into c k equal 0. Now we put here value of p, who is 7. We may write 49 minus 28k equal 0. We get 28k equal 49. We get
k equal 49 by 28, 7 7 ja 49, 7 4 ja 28. This will be equal to 7 by 4. So we get value of k equals 7 by 4. This is answer. Next, you see question number 6. Question number 6. k का वो निम्नतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 इक्वल 0 के मूल वास्तविक हों। गिवन इक्वेशन x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 equal 0. Here finding value of k when this equation has real roots. Comparing this equation with standard form quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0, we may write here a equal k, a equal 1, b equal k and c equal 4. For real roots, you know that discriminant will be is greater 0. d equal b square minus 4ac is greater 0. Put here value of a, b and c. K square minus 4 into a, 1 into c, 4 is greater 0. We may write k square minus 16 is greater 0. We get k square is greater 16. We get k is greater plus minus square root 16. We may write here k is greater plus minus 4. So we get here value of k here, make equal sign is greater or equal 0. Since you know that if equation has real roots, then discriminant is greater or equal 0. So here make equal sign. We get k is greater or equal 4, but is less or equal minus 4. बच्चों यहाँ k की जो वैल्यू -4 से लेस होगी वो नेगेटिव होगी और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि पॉजिटिव हो और लोएस्ट हो, सबसे कम हो। k का वो निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। सो वी मे राइट हियर लोएस्ट पॉजिटिव value of k will be equal to 4. This is answer. Question number
7 निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक हों। You solve this question yourself as I solved question number 6. Next, you see question number 9. यदि समीकरण 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square इक्वल 0 के मूल समान हों, मीन्स रूट्स इक्वल हैं, तो सिद्ध कीजिए कि c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। See this question. Given quadratic equation 1 plus m square into x square plus 2mcx plus c square minus a square equal 0. Here proving c square equal a square 1 plus m square. Comparing this equation with ax square plus bx plus c equal 0, but here given equation A and C used already, so comparing this equation with standard form quadratic equation capital AX square plus capital BX plus capital C equal 0. We obtain here value of A equal 1 plus m square, value of B equal 2mc, and value of capital C equals c square minus a square. You know have equal roots. Discriminant D, who will be equal to b square minus 4ac is equal to 0. Put here use capital B, capital A and capital C. We may write capital B square minus 4 capital A capital C equal 0. Now put here value of A, B and C. We may write B 2mc whole square minus 4A 1 plus m square into C square minus A square equal 0. On simplifying, we may write here 4m square c square minus 4 c square
square minus a square plus m square c square minus a square m square equal 0. और m square c square minus 4c square plus 4a square minus 4m square c square plus 4a square m square equal 0. Here this cancel, we get 4a square minus 4c square plus 4a square m square equal 0. Dividing here by 4, we get a square minus c square plus a square m square equal 0. We get c square equal a square plus a square m square. We get c square equal a square 1 plus m square. Hence, true.